na na I anyo jushato joshan buddhi Brahmsho Rajoguna Srimadad Abhijatyadir Yatra Stri Dutam Asava Srinarada Uvacha Nahyanyo Jusato Joshan Buddhi Brahm Shorajo Gunaha Shimadada Bija Jat Yadir Yatra Stri Juntam Asava Shri Narada Uvacha Nahyanyo Jusato Jusan Buddhi Brahmsho Rajogunaha Srimadada Bijat Yadir Yatra Stri Juntam Asavaha Shri Narada Uvacha Nahyanyo Jusato Joshan Buddhi Brahmsho Rajogunaha Srimada Abhijatyatir Yatra Stri Juntam Ashavaha Srimada Abhijatyatir Inada Uvacha Inada Uvacha Bhakti Srinada Vacha Nayanyo Jetso Joshan Srimada Janaji Mataji's Jim Nayanyo Jusato Joshan Srimada Nabijana Yatra Street Dunya Sada Shinada Vacha Nayanyo Jusato Joshan Nam Soja
Shri Narada Uvacha. Narada Muni said, Na, there is not. He, indeed. Anya, another material enjoyment. Jusata, of one who is enjoying. Joshan, things very attractive in the material world. Different varieties of eating, sleeping, mating, and defense. Buddhi Vramsha, such enjoyments attract the intelligence. Rajaguna, being controlled by the mode of passion. Shri Madat, then riches. Abhijatya Adi, among the four material principles. Attractive personal bodily features. Birth in an aristocratic family. Being very learned. And being very rich. Yatra, wherein. Stri, women. Jutam, gambling. Asava, wine. Wine, women, and gambling are very prominent. Translation. Narada Muni said, among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family, and being learned. And when one is uneducated, but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Among the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, people are certainly conducted by the lower qualities, namely passion and ignorance, and especially by passion. Conducted by the mode of passion, one becomes more and more involved in material existence. Therefore, human life is meant for subduing the modes of passion and ignorance and advancing in the mode of goodness. Tada rajas tamo bhava kama loba dayaschaye chaita atir annavidam stitam sattve prasithati. Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 2nd chapter, verse 19. This is culture. One must subdue the modes of passion and ignorance. In the mode of passion, when one is falsely proud of wealth, one engages his wealth only for three things, namely wine, women, and gambling. We can actually see
especially in this age, that those who have unnecessary riches simply try to enjoy these three things. In Western civilization, these three things are very prominent because of an unnecessary increase of wealth. Narada Muni considered all this in the case of Manigriva and Nalakuvera, because he found in them so much pride in the wealth of their father Kubera. तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तमो गुणों द्वारा और विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसीलिए मानव जीवन रजो तथा तमो गुणों का दमन करने और सतो गुण को वर्धित करने के लिए मिला है। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्ना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। भागवतम 1:2-19। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपना धन का झूठा गर्व हो जाता है तो वह अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है: शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं 3 वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकुवर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। Narada Muni said, among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family, and being learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. I was born in the darkness of ignorance when my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvisesa Sunyavade Pasacha. So we have occasions to experience people who become very wealthy. हमारे पास ऐसे कई अवसर हैं जिनमें हमने अनुभव किया है जब लोग धनी हो जाते हैं। When they weren't wealthy, they may be very nice people to be around. तो जब लोग धनी हो जाते हैं तो जब वे धनी नहीं थे तो वे बहुत ही अच्छे लोग थे। But then when they get money, they become very arrogant and proud. लेकिन जब उनको पैसा मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और दम्भी हो जाते हैं। Before I go further into explaining a few things on pride and giving some examples, I wanted to read this verse of the Bhagavatam, which Prabhupada has quoted here. इसके पहले कि मैं इस घमंड या दम अहंकार के बारे में कुछ बताऊं, अभी जो ये इस तात्पर्य में जो श्लोक है उस पर कुछ चर्चा करूंगा। So Prabhupada quotes, Tada rajas tamo bhava kama lobhadayas chaye cheta atir anandidam stitam sattve prasidati. Translation, as soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of the nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart.
then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. जैसे ही किसी भक्त के हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति स्थापित हो जाती है, तब वह तमो और रजोगुण के ऊपर उठ जाता है और उसके मन में जो भी काम और लोभ हैं, ये सारी उसके हृदय से इच्छाएं चली जाती हैं। तब जो भक्त है वह सतोगुण में स्थापित हो जाता है और आनंद की प्राप्ति करता है। So it is said that the three royal roads to hell is anger, lust, and greed. तो ऐसा कहा जाता है कि नरक जाने के 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध, लोभ। Of the 3 of them, which is the worst? इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन है? Raise your hand if you think you know. Prabhuji. His suggestion is that it's kama. And that would not be the correct answer. तो यह सही उत्तर नहीं है। Wait a minute, I didn't call on you. You gotta raise your hand. Okay, who wants to give a guess? No one? Okay. You would think it would be kama, lust, right? Because lust in the heart. आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो हृदय में जो काम है वह सबसे खतरनाक है। But Srila Prabhupada says, krodha, anger, you get very angry, right? Like we know the story of Jambavan in Krishna. And Krishna came to get the Shamantaka jewel. Jambavan had given it to his son. तो आप क्रोध के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप जैसे कभी कोई बहुत उत्तेजित हो सकते हैं, जैसे कि जामवान की कथा आती है। जब भगवान कृष्ण उनके पास स्यमंतक मणि लेने आते हैं तो जामवान अपने पुत्र को स्यमंतक मणि दे चुके रहते हैं। श्री राधा मदन मोहन के। So Krishna went to get this jewel was actually his, so he went to get it back. तो कृष्ण भगवान वह वापस स्यमंतक मणि पाना चाहते थे। And originally, actually, it was given to Srimati Radharani. और पूर्व काल में वास्तव में यह मणि राधा रानी के पास था। And I believe Lord Balaram gave it to Srimati Radharani. और मेरा अनुमान है कि बलराम जी ने इसे श्रीमती राधा रानी को दिया था। And then Radharani somehow or other gave it to the sun god. और फिर किसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने इसे सूर्य देव को दिया। And then the sun god had it and gave it to his worshipful devotee Satyajit. उसके बाद जो सूर्य देव हैं उनका एक भक्त था सत्रजित, उनको ये मणि दी। And when he put on that jewel, he started to glow just like the sun. जब सत्रजित ने यह मणि पहनी तो वह भी सूर्य के समान चमकने लगे। And it produced 180, is that correct? 180 pounds of gold every day. और 180, I think. वह करीब लगभग 180 पाउंड सोना प्रतिदिन उस मणि से निकलता था। That's a lot of gold. बहुत ज्यादा सोना है। That's like the size of me every day. लगभग मेरे जितना आकार है उतना ज्यादा सोना रोज निकलता था। So it was taken away in due course of time. और कुछ कालांतर में वह मणि उनसे चली गई थी। And somehow or other Jambavan had it. और किसी प्रकार से यह जामवान के पास पहुंच गई। But Jambavan is a great devotee of Ram. जामवान भगवान राम के महान भक्त थे। And he didn't care so much about material opulences. और वह भौतिक ऐश्वर्य के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। But Krishna was being defamed, so he wanted the jewel back. And Krishna's Jambavan's son was playing with the jewel. तो लेकिन भगवान कृष्ण पर आरोप लगा था मणि लेने का, तो इसलिए भगवान कृष्ण वो मणि लेना चाहते थे और वो देखें कि जामवान का लड़का उस मणि के साथ खेल रहा है। So Krishna came in front of the child and stood in front of the child. तो भगवान कृष्ण उस बच्चे के पास गए और खड़े हो गए। What would you do if you were playing with something and all of a sudden Krishna was standing there? आप क्या करेंगे? आप किसी चीज के साथ खेल रहे हो और आपके साथ सामने कृष्ण आ जाए। Would be very ecstatic.
बहुत ही आनंदमय होगा। But Jambavan did not think that was ecstatic. लेकिन जामवान ने ये नहीं सोचा कि ये बहुत ही आनंद का विषय है। He thought, oh, Krishna is coming to steal this jewel from my son. उन्होंने सोचा अरे कृष्ण मेरे बच्चे से यह मणि चुराने आए हैं। And in great anger, he attacked Krishna. और महान क्रोध में उसने भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। And they started to beat, pounding each other with trees and rocks. वो एक दूसरे पर घुसा मुक्के पेड़ पर्वत उठाकर फेंक कर मारने लगे। Pounding each other's body over and over again. एक दूसरे के शरीर को बार बार क्षति पहुंचा रहे थे। And this fight lasted all day long. और यह युद्ध पूरा दिन चलता रहा। I don't know, has any of you ever gotten in a fight क्या आप में से कभी ऐसे युद्ध में लड़ाई में पड़े हैं? with someone? No? I got in a lot of fights. They're really tiring. You get tired very quickly. जब आप लड़ाई करते तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। You get a few punches in, you got to win it quickly. But anyway, they were pounding on each other all day for 28 days. वो लगातार एक दूसरे को घुसे मुक्के से 28 दिनों तक पूरा युद्ध करते रहे। Achintya, inconceivable. पूरा अचिंत्य है, समझ के बाहर। Finally, it dawned on Jambavan, hey, I'm the strongest creature on the planet Earth. He's stronger than 10,000 elephants. Right? तो फिर जामवान ने सोचा कि मैं तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब में सबसे शक्तिशाली हूं। 10,000 हाथियों की शक्ति से भी ज्यादा है उनके पास। Who could fight with me for 28 days? भला मेरे साथ 28 दिनों तक कौन युद्ध कर सकता है? And he doesn't even look tired. और वो भी युद्ध भी वो थक भी नहीं रहे हैं। So that's Krishna. तो वह कृष्ण है। So finally, his anger subsided. तब उनका जो क्रोध है वह उसका दमन हुआ। And he realized that Krishna was his same worshipful Ramachandra. तब वह समझ गए कि जो भगवान कृष्ण है वह श्री रामचंद्र से अभिन्न है। Krishnastu Bhagavam Swayam. Krishna is the source of all other incarnations of Vishnu Tattva. जितने भी विष्णु तत्व हैं उन सबके जो स्रोत हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं। Okay, so and then when his anger was subsided, he was like, oh, now I can see Krishna. Now I can worship my Lord. जब उनका क्रोध शांत हुआ तब वह समझ गए कि अब मैं कृष्ण को देख सकता हूं, अपने भगवान को पूज सकता हूं। So that's Krodha. तो यह क्रोध है। Now Kama is also like that too. तो काम भी इसी प्रकार से है। There's one story of, I don't know if I can tell the story. Okay, there's one story of Lord Shiva. He missed seeing Mohini Murti. तो ये शिव जी का लीला है, जब वह मोहिनी का दर्शन किए थे नहीं कर पाए थे। Okay, so he came to Lord Narayan and said, "Oh, my dear Lord, you know, I wasn't at that pastime where they were dividing up, they were churning the ocean of milk, and they were producing this elixir of immortality." तो वो नारायण के पास आके बोलते हैं शिव जी की जब समुद्र मंथन हो रहा था अमृत निकालने के लिए, and he said, "But you manifested a female form that was so spectacular that it bewildered all the asuras." तब आपने एक अत्यंत आकर्षक एक भव्य स्त्री का जो रूप लिया था, उससे जो जितने भी असुर हैं वह सब चकित हो गए, आकर्षित हो गए। The demons had actually stolen the nectar from the demigods. असुरों ने देवताओं से अमृत चुरा लिया था। And they had a chance to drink the nectar and become eternal. और उनके पास यह अवसर भी था कि वो अमृत का पान करके अमर हो जाएं। But Krishna
manifested this form of Mohini Murti that was so beautiful, they forgot what they were even doing. तो लेकिन कृष्ण ने उसमें अपना एक इतना सुंदर मोहिनी का अवतार लिया कि असुर भूल भी गए कि वे क्या कर रहे हैं. And so they're staring, and Krishna speaks and says, now you don't want to drink that first, you want to give it to me. तो वे सब सिर्फ कृष्ण को, उस मोहिनी अवतार को देखते ही रह गए और भगवान ने कहा कि आप लोग इसे पहले मत पियो, मुझे दो. And they became so bewildered, they were, I know, that's what we want to do. तो वो इतना भ्रमित हो गए कि बोले ठीक है, हम तो यही चाहते थे. So they handed it over to Krishna. तो फिर उन्होंने वह पात्र कृष्ण को दे दिया. Anyways, this form was so disturbing that, or so attractive on a material plane, even though it is the Supreme Personality of Godhead, still it is the material form of the most beautiful woman in the entire universe. तो यद्यपि वो भगवान कृष्ण का अवतार है, वह बहुत ही सुंदर था और वह भगवान का इस ब्रह्मांड में भौतिक अवतार है. And because of lust, the demigods lost their opportunity to become immortal. तो चूंकि ऐसा कर दिया, इस कारण से वो देवताओं को यह अवसर मिला कि अमर बन जाएं. So then Lord Shiva says, you know, I'd like to see that form, my Lord, if it's all right. तो शिव जी बोले कि भगवान यदि ठीक हो तो मैं वह अवतार फिर से देखना चाहूंगा. And Narayan says, no, I don't think so. I don't think so. तो नारायण ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. And he says, what? Like, are you challenging my renunciation? तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे जो त्याग है उस पे चुनौती कर रहे हैं. And of course, Krishna's Trikalagya, he sees past, present, and future, and he goes, yes, pretty much, I am. तो कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब कुछ जो जानते हैं, तो बोले कि हाँ, मैं चुनौती कर रहा हूँ. And no one is more austere in this universe than Lord Shiva. और इस पूरे ब्रह्मांड में शिव जी से ज्यादा कोई भी ज्यादा तपस्वी नहीं है. Anyways, I don't want to go through all the details of it, but basically Krishna disappeared from his sight, Narayan, and then he heard this tinkling of ankle bells and he saw Mohini Murti bouncing a ball. तो तब वहां से नारायण जो है वो अप्रकट हो गए और तभी वहां से उन्होंने उनके पायल की छनकार सुनी और देखा मोहिनी अवतार प्रकट हुए जो गेंद के साथ खेल रही थी. And he was so enthralled, overwhelmed, enchanted, he could not take his eyes off this form. और शिव जी इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए थे कि वे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे थे उस रूप से. And his wife was sitting, Parvati is sitting right there next to him. यद्यपि उनकी जो पत्नी है माता पार्वती उनके बगल ही बैठी थी. This of course is Leela. यह निश्चित ही लीला है. But he started chasing after Mohini Murti. लेकिन फिर भी वह मोहिनी अवतार के पीछे भागकर उनका पकड़ने का चाहने लगे. And he grabbed her and held her, and somehow or other she slipped away. और वह उनको पकड़ लिए, लेकिन फिर भी मोहिनी अवतार उनसे निकलकर दूर भाग गई. So this is the cause of karma. He started chasing her all throughout the universe. तो यह काम का प्रभाव है कि वह उनका पीछा पूरे ब्रह्मांड में करने लगे. So at the end, Lord Shiva came to his senses. फिर बाद में शिव जी अपने होश में वापस आए. So that is karma. When you go for lust, one seeks it, and then after it's gratified, it's finished. Finished. तो यह काम है जब भी कोई इसमें पड़ता है तो. But the worst of the krodha, kama, lobha, the worst of those three is lobha.
लेकिन जो काम है, क्रोध है, लोभ है, इनमें सबसे खतरनाक लोभ है. Because one's anger, you become angry, and then your anger, okay, I'm not angry anymore, right? You release it. जब कोई गुस्सा होता है तो थोड़ी देर तक क्रोध रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है, ठीक अब तो नहीं गुस्सा हूं. Same with lust. ऐसा ही release काम it. है. But lobha, greed, burns like fire and is never satisfied. Never satisfied. लेकिन यह जो लोभ है, यह एक आग के कारण है जो लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और कभी भी तुष्ट नहीं होता. Everyone is thinking, if I get to here, oh, then I'll be happy. And then they get to there. सब कोई सोचता है कि अगर मैं इस मुकाम को पहुंच लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, और फिर वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है, फिर भी नहीं खुश रहता. And then they see, oh, no, I meant to just get here, and then I'll be happy. लेकिन फिर वो उस वहां पहुंचकर सोचता है अगर मैं अगले पड़ाव पे पहुंच जाऊं तो शायद खुश हो जाऊंगा. And it's just the carrot in front of the donkey's nose. तो इसका यह तो उसी तरह है जैसे मान लो एक गधे के सामने जो गाजर लटकाई रहती है. That is called mudha. Avajananti mamudha, Krishna says. तो उनको मूढ़ कहते हैं. Fools deride me when I descend in my transcendental form. They do not know my transcendental nature, my supreme dominion over all that be. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी मैं इस धरा पर प्रकट होता हूं तो जो मूर्ख हैं वह मेरे रूप की अवमानना करते हैं. So this greed factor, because of greed, everything else follows. Because of greed, anger follows. Actually, first lust follows. Right? It says, while contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them. From such attachment, lust develops. From lust, anger arises. When one becomes angry, then bewilderment of memory. When the memory is bewildered, the intelligence is lost, and when the intelligence is lost, one falls down into the material pool. Do you know that? You know that verse? So, it's in the Bhagavad Gita. यह जो सब कुछ लोभ से ही शुरू होता है. जब व्यक्ति को लोभ आता है तो काम आता है, फिर उसके बाद अन्य भी दुर्गुण आते हैं. तो सबसे पहले तो किसी विषय वस्तु पर ध्यान करने से उससे आसक्ति होती है, और फिर उसका उससे और भी ज्यादा उसको फिर क्रोध आता है, फिर उसका स्मृति भ्रम हो जाती है, और इस प्रकार से जब उसकी स्मृति भ्रम हो जाती है तो वह उसका विनाश हो जाता है. So there was one fellow, he was a very poor fellow in America. एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था, अमेरिका की बात है. But he had an idea. उसके पास एक सोच विचार था. And he was working in his garage trying to develop this idea. तो वह अपने गैराज में काम कर रहा था, उस अपने विचार पे काम कर रहा था. He had an engineering degree. उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी. Actually, I don't think it was a degree. I think he had some experience of it. His name was Steve Jobs. You may have heard of him. तो आप लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा. डिग्री नहीं थी, अनुभव था इंजीनियरिंग का. Have you heard of Steve Jobs? Apple computers? Okay. So he was very poor. And he said when he was trying to develop his computer, he had no money for food. तो स्टीव जॉब्स जब अपना कंप्यूटर डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खा सके. And he said the only food he would get was from the Hare Krishna temple. बोले कि सिर्फ उन्हें खाना तभी मिलता था जब वो हरे कृष्ण मंदिर जाते थे. So he was poor and the devotees were feeding him. तो वो बहुत गरीब थे और भक्त उन्हें खिलाते थे. But when he got rich, he never gave one penny to Krishna. लेकिन जब वो अमीर बन गया तो उसने एक कौड़ी भी कृष्ण को नहीं दी. Because of his greed. अपने लोभ के कारण. This is a very unfortunate soul. तो वह बहुत ही दुर्भाग्यजनक
आत्मा थे। Fortunate he took prasad, right? He took prasad, that's good. तो सौभाग्य उनका यह था कि उन्होंने प्रसाद लिया, But what he could have done with his billions and billions of dollars. लेकिन वह अपने जो उनका करोड़ों अरबों रुपए थे उससे वो कुछ और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? But one thing we know for certain is that his billions of dollars could not save him from death. लेकिन हम एक चीज तो समझिए, उसके जो अरबों रुपए हैं वह उसको मृत्यु से नहीं बचा सके। So one should take heed, of course, we see these examples. This is the long story of Nala Kuvera and Manigriva, how they, out of their greed, they were very arrogant because they were rich. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नलकुवर और मणिग्रीव हैं वो भी लोभ के कारण, but because they were rich, they were too proud and they were offensive. क्योंकि वे धनी थे इसलिए बहुत ही ज्यादा अहंकारी थे और अपराध भी कर रहे थे। By the mercy of the devotee, they eventually had to take birth as a tree for thousands of years, remain as a tree with the consciousness of a demigod. लेकिन भक्त की कृपा से उनको वृक्ष की योनि में जन्म मिला, उनकी जो चेतना थी वह वापिस ही थी, वैसी ही थी, और वो हजारों वर्ष तक उसी शरीर में थे। And because Krishna loves his devotees so much, he loves Narada Muni so much, Narada Muni gave them the benediction that when they gave up that tree body, that they would be liberated by the Supreme Personality of Godhead. तो भगवान कृष्ण है, वह अपने भक्तों से, नारद मुनि से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब भी उन्होंने वह शरीर उस वृक्ष के शरीर से छोड़ा तो उन्हें मुक्ति मिली। So we are sitting here and we are listening to the pastimes of the Lord throughout the Srimad Bhagavatam. तो अभी हम यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवतम का, यहाँ पे भगवान की जो लीला है उसका श्रवण कर रहे हैं। Nasa praise abadeshu nityam bhagavata sevaya. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service unto the pure devotees, all that is inauspicious within your heart will become destroyed practically to nil. तो भागवत की कक्षा में नित्य उपस्थिति से और शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमारे हृदय के जो भी कल्मश हैं वह प्रायः समाप्त हो जाते हैं। And thus unalloyed devotional service unto the personality of Godhead will become established as an irrevocable fact. तब भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति हृदय में पूर्णतः स्थापित हो जाती है। See, this fellow Steve Jobs, he was investing in this computer, investing, right? Investing all his brains, all his money, whatever he had, he was putting into this. तो ये जो व्यक्ति हैं स्टीव जॉब्स, अपना पूरा पैसा, दिमाग, सब कुछ ये अपने कंप्यूटर में लगा रहे थे। We are also investing. That's why we're sitting here and not, smoking beedies, getting on a rickshaw or whatever, one of these taxis, and going to work and laboring so hard. तो हम भी निवेश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके बीड़ी पी रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह करके काम कर पे जा रहे हैं। Because he put his investments in the wrong bank account. लेकिन उन्होंने जो है अपना जो निवेश किया था एक गलत बैंक अकाउंट में किया था। We have a material bank account and then we have a spiritual bank account. हमारे पास भौतिक और आध्यात्मिक बैंक के खाते हैं। Everything you do for Krishna, every word you say, every syllable you utter, Hare, हरे Krishna, हरे कृष्णा, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, Rama,
Rama, Hare, Hare. That is all an investment in all of your eternal bank accounts. तो आप भगवान कृष्ण के लिए अगर कुछ छोटा भी करते हैं, एक शब्द भी भगवान के लिए बोलते हैं, तो Go ahead. आपके आध्यात्मिक खाते में हमेशा के लिए जमा हो जाता है. So, not only are you more intelligent than this Steve Jobs and Bill Gates and Elon Musk, you're much more intelligent. Much more intelligent. ये जो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सब व्यक्ति हैं, उन सब से आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं. But you are much more wealthy than them as well. और आप उनसे ज्यादा धनी भी हैं. There is no comparison to being in Goloka Vrindavan, to be in this Mahatattva. तो गोलोक वृंदावन में रहना और इस महत्त्व में रहना, उसमें तो कोई तुलना ही नहीं है. One time the devotee said, Srila Prabhupada gave this ecstatic lecture, and he said, just Prabhupada had a way of like capturing all of us and just throwing us up to Krishna Loka. तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार बहुत ही बढ़िया क्लास दी, और श्रील प्रभुपाद का ये तरीका था कि जब वो कक्षा देते थे तो ऐसा लगता था कि वो हम सबको कृष्ण लोक भेज दे रहे हैं. And one of the devotees said, Srila Prabhupada will make you king of the world. तो एक बार भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि श्रील प्रभुपाद, हम आपको इस दुनिया का राजा बना देंगे. Prabhupada stopped and said, What? श्रील प्रभुपाद रुके और बोले, क्या? King of hell? उन्होंने बोला कि नरक का राजा. I'd rather be a servant in Goloka Vrindavan. उससे अच्छा कि ये गोलोक में एक दास बन जाए. So, devotees know, we're on the court, we're on the ship, we're sailing across the ocean of birth and death. तो जो भक्त हैं वह जानते हैं कि वह नाव पे बैठे हैं और इस जन्म मृत्यु के सागर पे बैठकर वह आगे जा रहे हैं. And everything that is attractive in Krishna consciousness, Srila Prabhupada said, the Srimad Bhagavatam is just a drop, just one drop of the unlimited ocean of ecstasy of Krishna's pastimes. It's just one drop. तो कृष्ण भावनामृत में जो भी चीजें आकर्षित करती हैं, या फिर जैसे कि है श्रीमद् भागवतम, यह भगवान कृष्ण की जो अनंत लीलाएं हैं, उस अनंत सागर का सिर्फ एक छोटा बूंद है. So don't dive into this material world. It's a bad, bad, bad investment. तो आप इस भौतिक जगत में गोते मत लगाइए, यह बहुत ही खराब निवेश है. You are all winners in this world. In this world, there are two types of people. That's all. तो आप सब विजेता हैं इस भौतिक जगत में. इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. There is winners and there is losers. एक विजेता होते हैं और दूसरे पराजित. That's it. That's it. बस इतना. So thank you for all of you being the winners. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब विजेता हैं. You know the expression, I used this last class. Winners never quit. Winners never quit. And quitters never win. आप ये जानते ही हैं कि जो विजेता हैं वो कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी विजेता नहीं होते. So let's stay together. We only have a few more years on this planet. तो इसलिए सब मिल के रहिए. हमारे पास इस लोक में सिर्फ कुछ ही साल हैं. And for myself, I want to see Guru Maharaj again. I want to see Srila Prabhupada again. And we can do this if we just stay on the boat of transcendental consciousness. तो अगर इस दिव्य चेतना की नाव पे हम बैठे रहें तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं. और हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गुरु महाराज को और श्रील प्रभुपाद का दर्शन करना चाहता हूं. Just see what your Guru Maharaj and my Guru Maharaj manifested in these 6 altars here. That's just a drop
of the unlimited ocean. Just giving you a taste. तो मेरे गुरु महाराज और आपके गुरु महाराज ने जो भी इस दुनिया में प्रकट किया है, जैसे कि यहाँ पे 6 ऑल्टर हैं, वह भगवान की अनंत लीलाओं का सिर्फ एक छोटा बूंद है. Don't be a loser and give up Goloka Vrindavan for hell. तो आप एक पराजित व्यक्ति नहीं बनिए कि आप गोलोक वृंदावन छोड़ के आप नरक में जाइए. Hare Krishna. Thank you very much. Is there any questions? Comments? Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Going back to Godhead ki. Gaur Premanandi. His Grace Udayananda Prabhu ki jai. Okay, another investment. Hare Krishna. Space.